Hello everyone. I'm nutritionist Riddhi Patel, co-founder of Nutribit Foods. Here we all know that parenting is a wonderful journey, but similarly it is very difficult when it's come to foods and nutrition. So last पॉडकास्ट पे हम गायनेक के साथ लेकर आए थे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है बट हियर टुडे वी हैव न्यूट्रिशनिस्ट प्रीथा किरण विथ अस प्रेगनेंसी में फूड्स न्यूट्रिशन में क्या ध्यान रखना पड़ता है सो टुडे शी इज हियर विथ अस प्रीथा किरण she has she's experienced 23 years in this field. She is from Mumbai. उनका खुद का क्लिनिक भी मुंबई में है. न्यूट्रिशन ऑन योर प्लेट उनका क्लिनिक का नाम है. शी इज डायबिटिक एजुकेटर, सर्टिफाइड डायबिटिक एजुकेटर. वो ओबेसिटी एक्सपर्ट है और हेल्थ अवेयरनेस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी है. वो ऑलवेज पर्सनलाइज डाइट प्लान देना प्रेफर करते हैं क्योंकि सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है और क्लिनिकल बेस्ड रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग ही रहती है, जैसे कि किडनी डिसऑर्डर्स, डायबिटिक, थायराइड, हाइपरटेंशन, लिवर डिसऑर्डर्स, जिसकी जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है उनके हिसाब से वो हमेशा पर्सनलाइज डाइट प्लान प्रेफर करती है क्लाइंट को या पेशेंट को देने के लिए. एंड शी इज ऑल्सो एक्सपर्ट फॉर इन्फेंट्स, toddlers, child nutrition, and pregnancy nutrition as well. So today she is here to share her knowledge with us कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं, व्हाट यू हैव टू ईट, व्हाट यू हैव टू अवॉइड, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके बेबी के लिए अच्छा है. सो शी इज हियर विथ अस. वेलकम न्यूट्रिशनिस्ट प्रीथा किरण. वेलकम with Thank, Nutribit Foods. thank you so much So for. here we are for you to spread awareness. Yes, Preetha Kiran. Thank you, Riddhi, for this wonderful introduction of mine. So, before I start, the topic that we have taken today is so exciting. To just see the pink lines on the, the marker and realize that you're pregnant. That is such an exciting, surprising, and very confusing moment for a mother. It's the right kind of podcast that we are doing, where we are trying to make them aware of what they can do with regards to nutrition, whether they should be eating something, whether so there are so many things that we can discuss about today. वेरी ट्रू बिकॉज वो मोमेंट इतनी स्पेशल रहती है हर एक मॉम्स के साथ. जब सिर्फ हमारे लिए होता है तो हम एक दो बार ऐसा सोच भी लेते हैं कि चलो इट्स फाइन, खा लेंगे या नहीं खा लेंगे, पर जिस दिन से, जिस मोमेंट से वी गॉट दैट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू बी मदर, तो वो एक लाइफ चेंज ही हो जाती है. और हर एक मॉम के लिए जब बच्चे की बात आती है तो हमेशा खाना हो या एक स्टेप हो, हम एक बार नहीं 100 times we think that what we have to eat and what we have to avoid. Absolutely. And in our traditions also, there is so many things that, there are do's and don'ts. And then people who are little aware, उनको लगता है हम वो follow करें कि ये follow करें, डॉक्टर ने कुछ बोला है, सोशल मीडिया में कुछ और चल रहा है. तो this is like a beautiful thing that, we've come up with. And I really applaud Yes. you for getting this platform here to discuss वो भी about एक this. चीज मॉम्स को खास करके बतानी रहेगी कि सोशल मीडिया इज अ वास्ट, बट जो भी इंफॉर्मेशन ऑलवेज सोशल मीडिया पे होती है वो 100% ट्रू नहीं होती है. श्योर यू कैन रिलाई ऑन सोशल मीडिया, पर हर एक चीज में सोशल मीडिया पे रिलाई होना भी अच्छी बात नहीं है. यू हैव टू ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और यू कैन कंसल्ट क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. यानी यहाँ पे अभी वी आर ऑल्सो फोर्स टू गो ऑन सोशल मीडिया ओनली, बट येस वी आर टेकिंग दिस इंटेंशन इन अ वेरी ट्रुथफुल मैनर, वेयर वी आर सेइंग हम कोई भी गिमिक्स नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ सही रास्ता बता रहे हैं कि आप ये करो और हाउ यू कैन गेट टू वेयर यू वांट टू रीच फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर योर चाइल्ड. So yes, Preetha Kiran ji, आज we'll discuss first
दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसे कौन से क्रिटिकल फेजेस आते हैं जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ता है, एंड व्हाट इज दैट? सो एट लार्ज प्रेगनेंसी को हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है. सो द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर, एज वी ऑल नो इट. And to be very honest, the maximum growth happens during the second and the third trimester. For the child, for the mother also, there's a lot of bodily changes that take place, hormones and other things. काफी leaps and bounds में वो improvements होती है. um, Saying that, I will say that today's podcast, we have decided that we will focus on the first trimester, where what best can be done to ready yourself to go to the second trimester. ये चीज हम आज ब्रिज करने वाले हैं. And in the first trimester, that is the first 3 months of pregnancy, I would say it has to start even before that. तो अगर आपने whether you're newly married, whether you're established in your career, business, the moment you decide you want to become a mother, from that time I should say that women should take care of their health. And certain nutrients like folic acid, जो folate हम बोलते हैं, उसको हमें even I would say 3 to 4 months before conception अगर आप start करते हो, तो that gives a lot of impact, for the kind of conception that happens, for the cell to grow with little lesser chances of birth defects, etc. So my suggestion, if you are would want to be mother, I will put it that way, then you should make sure that good nutrition starts even from that time. वैसे भी women Yes. they care less for themselves. हम अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं, and we are not really coming forward to making sure that हम वही time और energy अपने ऊपर भी डालें. But this is a message to all wannabe mothers कि आप पहले से ही अपना सेहत with regards to nutrition थोड़ा सा ध्यान दें. And it's not necessary that आप है ना कोई भी supplements या ऐसे कुछ लें. You can simply start with green leafy vegetables हो गए, organic fruits, vegetables, fresh products. These are the things that are actually quite rich in folic acid and folates. So you can start having that. There's a handful of nuts that you have. इतनी छोटी छोटी चीजें आप स्टार्ट कर सकते हो to just keep adding to the pile of nutrition that you can give to your body even before you conceive. So it's very very important. यस यस, And वेरी ट्रू वेरी ट्रू, क्योंकि जब हम प्री प्लान करते हैं प्रेगनेंसी का, तो डॉक्टर्स हमेशा फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा लेते हैं, क्योंकि जब नॉर्मली प्लानिंग करते हैं तो फॉलिकल्स जो बनते हैं, इट ऑल्सो लाइक डॉक्टर्स गायनेक्स बोलते हैं कि फॉलिक एसिड की वजह से वो फॉलिकल्स भी आपके इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रहने के लिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी दीदी, एसेंशियल. इतने यंग कपल्स आते हैं जिनको ऑफ कोर्स वेट लॉस विल बी अ गोल, या हार्मोनल जो भी है उनके इश्यूज फॉर कंसीविंग. जब वो आते हैं तो हम वही बोलते हैं कि आपको गुड न्यूट्रिशन से स्टार्ट करना है. ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अनदर पार्ट. येस, ऑफ कोर्स दैट वैल्यू वी कैन नॉट टेक आउट विद द गायनैक और द डॉक्टर्स, बट इंटरनली जो रेडीनेस हमें करनी है टू स्टार्ट अ फैमिली, इट स्टार्ट्स ओनली विथ न्यूट्रिशन. तो इट्स वेरी वेरी एसेंशियल कि यस, लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस, फॉलिक एसिड इज इम्पॉर्टेंट. उसके साथ साथ काफी और डिफरेंट मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं. देर आर बिग प्लेयर्स लाइक कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर अ मदर when she gets from a unconfirmed pregnancy to a confirmed pregnancy. So the moment that transition takes place, let's say 2-3 weeks में ये पता चल जाता है. So in that transition, not only folic acid, calcium, vitamin D, this will definitely make a difference to the mother's health. We know calcium, vitamin D, bone health, and bone strength and all that, because what happens when a new cell is embedded in our body, there are a lot of chances that that particular cell, okay, or to be very honest, we should put it as a little bundle that is growing inside, that actually requires nutrition, and it will take what it wants from the mother, and the mother is drained. So we need to make sure that she starts feeding herself properly.
तो फॉलिक यस एसिड हो यस गया, वेरी ट्रू, कैल्शियम हो क्योंकि गया। काफी टाइम मदर जब वर्किंग होती है या तो न्यूक्लियर फैमिलीज में, वो हमेशा रहता है कि चलो एक मग दूध ले लिया या थोड़ी सी सब्जी खा ली या रोटी खा लिया, तो काफी बार ऐसा लगता है कि चलो इतना ले लिया काफी है, मैं मेरा भी पेट भर गया, बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन ममा को नहीं मिलता है तो उनकी इम्पैक्ट मदर पे और बेबी पे दोनों पे आती है। वो हमें सबसे ज्यादा मेक श्योर करना पड़ता है कि जैसे हम ऑलवेज एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम बोलते हैं कि रेनबो फ्रूट्स और रेनबो वेजिटेबल्स हमें कंज्यूम करने ही है, क्योंकि न्यूट्रिशन लैकिंग रह जाता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मेन ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितना भी बेबी का ग्रोथ होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए, इट इज सो न्यूट्रिशन, गुड फूड प्लेज अ वेरी क्रूशियल पार्ट। Very important role. And food is medicine, we all know that. तो या जब हम ये बात कर रहे हैं फूड सो फूड एक्चुअली डज व्हाट, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ एसेंशियल vitamins, minerals, essential things that are required for good growth and development for not only pregnant women or the baby, for any human being. So saying that, I will also say that हम छोटी छोटी चीजें अभी पिक एंड चूज कर रहे हैं कि फोलिक एसिड हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, उसके साथ साथ हमें वी हैव टू मेक श्योर दैट वी गिव गुड फैट्स ऑल्सो. So omega rich foods ho gaye, fresh fruits and vegetables, always we talk about that as nutritionists. So हम that थोड़े ho से gaya. आज यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी देंगे कि व्हाट टाइप ऑफ विच फूड्स कंटेन्स फॉलिक, गुड अमाउंट ऑफ फॉलिक, गुड अमाउnt of calcium, so we Correct. can share with that as well. So my what I would want to say is when you confirm, पहले तो कंफर्मेशन के पहले हमने फोलिक एसिड की बात की, अब कंफर्म हो Yes. गया है कि यू आर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तब आपको क्या करना है, ना ही आपको फॉलिक एसिड और वो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए उससे यू आर डिराइविंग फॉलिक एसिड, ना ही वो एक सोर्स हो गया. You have nuts and oil seeds which are not only rich in folic acid but they're also rich in omega. तो ऐसे जुड़ते जाता है. तो मेक श्योर दैट यू डोंट फोकस ऑन अ सिंगल फूड, यू हैव टू टेक ऑल द फूड ग्रुप्स इनटू अकाउंट. सो यू नीड योर ग्रेन्स, यू नीड योर डेयरी प्रोडक्ट्स, you need your protein, good fats, and most important, hydration. ये हम भूल Yes. जाते हैं इन दैट एक्साइटमेंट ऑफ फोकसिंग ऑन सर्टेन फूड्स कि हाँ डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने बोला है मुझे कैल्शियम लेना है, तो मैं कैल्शियम रिच सोर्सेस, जैसे कैल्शियम बोलते ही हमें बचपन से हमको ये पता है कि दूध पीने से कैल्शियम मिलता है, अंडा खाने से कैल्शियम मिलता है. बट डोंट फॉरगेट दैट अ सिंपल चीज लाइक गुआवा, एक पेरू, अगर आप अपने डाइट में रोज इंक्लूड करोगे, उसके अमाउंट ऑफ कैल्शियम दैट इट कैन गिव, the availability that is given to your body to absorb is much more. So here is where our role comes into play, where we can pick and choose and tell you, look, if you're deficient in one thing, you don't have to stick to only one product. अगेन जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें ये भी है कि हमको रिजेक्शन भी होता है. काफी लोगों को there are signs and symptoms that come into play. People like Yes. certain things, कोई अचार खाना चाहता है, कोई बिस्किट खा रहा है. So there are so many psychological, and I will put it as even physiological, psychological and physiological, and then of course the influence of elders at home, traditional foods and all that, that actually creates a kind of a restriction for a lady who is pregnant for the first time. तो ये कंफ्यूजन जो होता है उसमें वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ऑलवेज ट्राई एंड बैलेंस इट आउट. So there are 4 5 important ingredients of nutrition that you need to keep into mind. One, first and foremost, will be your vitamins, then will be your protein. Third, I will say good fats. So good fats, bad fats, we will talk about it in little more detail further when we talk about the other questions that are there that we can discuss about. And like I mentioned, you need to make sure that you don't give up on your carbohydrates, because जब हम कंसेप्शन की बात करते हैं, सो देर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर एक्सेस वेट
can be a hindrance to conception. So we try as professionals to curb down the amount of calories that come from, let's say, a particular source like carbohydrates. But in first trimester, do not shy away from that. Please don't say that, I will not eat carbs at all, or I will only follow a high protein diet or something like that, which is not going to help you. This is the phase where in throughout the pregnancy there is a leeway of 12 to 14 kgs that you should put on as a weight in the whole 9 months. But in first trimester the limit is only up till 2 kgs. सो ये हमको ध्यान रखना है. और वो 2 kg भी हम कैसे इम्प्रूव करेंगे. इट इज नॉट ओनली वेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. हाउ मच ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स वी आर प्रोवाइडिंग टू ईच सेल. How much of nutrients are actually getting utilized for the growth and development of the fetus, the embedment of the fetus. So that is important. So वो जो 1-2 kg जो हमको improve करने हैं first trimester में, उसमें आप you make sure कि हम सारे ही इंग्रेडिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड हाइड्रेशन, ये सारा ही फोकस करें. सो दिस विल बी डेफिनेटली वन मिथ जो मुझे अभी से बोलना है कि देयर इज नो स्पेशल डाइट. There is only a diet that will include all of these together, and that is the one that you have to approach the first trimester with. यस 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 यस. तो हमें ये भी शेयर करना हमारे साथ कि ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या-क्या फूड्स में हमें अवॉइड करना चाहिए? So व्हाट वी हैव टू अवॉइड? अवॉइड का भी अभी ये है कि लाइक आई सेड देयर आर सो मेनी थिंग्स, कल्चरल थिंग्स आर देयर, social things are there, your friends influence you, the great Google influences all of us. There are so many do's and don'ts that any influencer comes up with, and people get influenced by social media a lot. सो इसमें ये है कि आप फर्स्ट ये अंडरस्टैंड करो कि बिफोर यू कंसीव्ड आपको कोई एलर्जीज थी कि नहीं, where you not able to digest certain things. So there are certain people who may be by birth let's say lactose intolerant or something like that. Then yes, of course, you also know that if you have a condition where you're not able to digest a particular food, then you will have to definitely avoid that. Saying that, certain things which are risky foods, like we say, एक तो आपका हो गया certain kinds of cheese. So we don't know the culture of the cheese that has been processed to get us that cheese in your plate. So mostly जो soft cheeses होती हैं, that I would say you should try and avoid. If you are a non-vegetarian and if you have let's say a lot of fish and seafood in your diet, then हाँ, थोड़े सारे ऐसे फिशेस हैं जिनमें मर्क्यूरी कंटेंट ज्यादा हो सकता है. So that may cause a little bit of hindrance in the growth of your baby. So that we'll have to make sure that that toxicity does not happen. So seafoods थोड़ा सा आप for first 2-3 months के लिए अगर थोड़ा forgive करके safe foods खाएं तो वो better है. Third, I will say any food that is that has to be cooked properly और आपने शायद नहीं किया होगा, या जैसे people in you go to restaurants and there are these raw eggs etc that they use in certain, abhi to itne sare cuisines hain, and every culture has a different approach towards food. यस So we have seen that if you order a Korean or a Japanese food, then there are a lot of chances where they have a semi cooked raw kind of egg on top of a fried rice or something like that. So it would be better you not going in for such recipes, because then again agar raw ho gaya and you are used to having proper hard boiled or eggs which are cooked properly, that may cause some gastric problems, or even the microorganisms that are there can aggravate your gastrointestinal tract, and that may cause discomfort when you are in the first trimester. Of course, alcohol, we all know that यस मैं क्या आप भी रिद्धि, हमें पता है कि as our प्रोफेशन हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि हाँ आप पी सकते हो.
So, which Very is true. definitely, Very you know, true. we all know it's injurious to health. Whatever amount you drink is going to be injurious. I will never say, or nor will Very you true. सजेस्ट. हमें आके पूछते हैं लोग कि मैं एक लूंगा तो मैं 100 ml लूंगा, मैं 300, but we all know that जितना भी जाएगा, that is going to hamper your brain development, your bodily, you know, Very everything true. goes Very true. down. Alcohol, smoking, even Smoking, soft drinks are also not advisable. rated drinks, of course, it's also loaded with a lot of sugar. We don't want those kinds of unnecessary calories to add on to your first trimester weight gain. It has to be healthy. Like I said, we have only a leeway of, let's say, maximum 2.5 kgs ही हम expect करते हैं in a mother in the first 3 months of pregnancy. तो वो Okay. हमें याद रखना है कि we can't just load on extra sugars and all that. Saying that, people are addicted to tea, coffee. So again, caffeine, to an extent, we don't suggest that, you know, you go in for caffeine. Whenever you're cooking food, cleanliness, you know, हम सबने किया है pandemic में. Most We have important thing. washed and we have rewashed, and you know, special vegetable sprays आते थे. तो यहाँ पे you make sure that, you know, your whatever you buy from the market, clean it yourself, so you are mentally, you know, clear that, you know, we have had washed vegetables and fruits to eat if you're eating it raw. So I think these are small little points that, you know, we need to. And of course, addiction of caffeine हमने वो आधे में छोड़ दिया. Too much of anything is bad, so don't overdo also anything. And don't, you know, forgo any food also totally. So it should always be a kind of a balance where you're taking थोड़ा थोड़ा सब चीज का लेके हमने एक थाली बना ली. So it's basically like that, you know, it's a balanced meal that, you know, we need to approach. Yes, yes, very true. Yes, one more thing, if you can share with us, first trimester में काफी moms को vomiting का रहता है, headache Mhm. का symptoms थोड़े से रहते हैं. So, Correct. if you can give some tips, वो time पे हम कौन से food consume कर सकते हैं जिससे उनको relief मिल सके? So, when we are talking about morning sickness या nausea वगैरह जो commonly होता है, because it's like a, you know, the body suddenly feels that there is a some foreign body inside you, so they want to reject it. So it's basically a mechanism of your, you know, वो जो fighting bodies हैं हमारे cells में, उनको ऐसा लगता है there is some foreign object, and because of which they want it to, you know, expel out of your body. Again, surface area थोड़ा increase होने लगता है, उस वजह से, you know, you're getting a little bit of pressure, and that is why the reflex takes place. Thirdly, certain smells हो गए, certain sight हो गया. So all five senses हमारे एक्स्ट्रा, यू नो, एंटीना ज्यादा चलता है उस टाइम पे. तो उस वजह से सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सर्टेन फूड्स डेफिनेटली होता है. एंड वॉमिटिंग, और इसके लिए जनरली whatever we do as per, you know, ayurveda, I will say, you know, going in for, let's say, something like ginger. Okay. Adrak ho gaya. You can even have some candies that you can keep in your pocket. So orange ki goli aati thi, lemon ki goli aati hai, that you can actually keep and keep sucking, so that, you know, you try and calm down. Also, don't have late nights, you know, where late night food ho raha hai, and then, you know, early morning when you get up it's half digested or it's not digested, and then you want to, you know, throw up or anything. Apart from morning sickness, I will also say there are one or two things that a pregnant woman in her first trimester really deals with. One would be your constipation. Okay. Which also causes a lot of discomfort for the mother. So when I said that in the first trimester you should always balance it out, and there was a lot of focus on fresh fruits and vegetables. So make sure that you get your share of fiber, so that you don't end up having constipation, and keep hydrating yourself. So agar aap pani bhul jaoge pina, you know, and it's not that with constipation. Okay. Due to higher levels of hormonal changes that take place, you know, there's a lot of unrest, and hormones like progesterone, etc., no, they end up triggering your gut, you know, and that can cause a little bit of constipation. So वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि not only your
vomiting or nausea. Constipation also has to be dealt with very carefully when you're in your first trimester. Third thing is your cravings. So as a pregnant woman, किसी को इमली खाना है, किसी को अचार खाना है, all this comes into play. So try doing one thing. Suppose you feel you want to have a lot of, I know of, friends who wanted to eat only pizza all through their, pregnancy. तो अगर वो करना है तो you be mindful that you need to add a lot of healthier options also. So if you're planning to order pizza for dinner, then your lunch and your snack that you're doing in between your lunch and dinner should be healthy. So add in a handful of nuts, go in for some makhana bhel or something like that, and then during your dinner time have 1 or 2 glasses of water first, wait for some time, enjoy your pizza, but don't overdo it. आपको दो लोगों के लिए खाना खाने की जरूरत नहीं है. You're only ये one entity. That ये time जो and again. नाउ यू आर गोइंग टू बी अ मदर, तो आपको सिर्फ आपके लिए नहीं पर बेबी के लिए भी खाना है. इट इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग थिंग. Wrong, पर very wrong. ऐसा ऐसा क्यों हम बात करते हैं, ताकि हम जो खाए पर उससे ज्यादा हम क्या न्यूट्रिशन वाला फूड खा रहे हैं. बिकॉज हमारे बॉडी में हमारा बेबी भी है साथ में. सो हमारे साथ एक और जॉइन हो रहा है, तो उसके लिए खाना है. मतलब वी हैव टू ईट समथिंग न्यूट्रिशन जो हम खाएंगे तो अल्टीमेटली वो बेबी को मिले. इसकी वजह से वो कहा जाता है कि ईट गुड फूड, ईट हेल्दी फूड. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मम्मा बनने जा रहे हो तो मम्मा के लिए भी खाओ और बच्चे के लिए भी खाओ. नहीं, Need यू not do that. हैव फुल मील with good food, include all 5 food groups like good veggies, good fruits, milk. Yes, जैसे प्रीथा किरण जी ने बताया कि even carbs are very important. Important. Very, very important. Yes, Absolutely. it plays a Um, सबसे ज्यादा हम देखने जाए तो carbs is important than protein. बाद में हम देखने जाए तो fat, तो carbs सबसे ऊपर रहता है उसमें. एब्सोल्युटली. एक पर्टिकुलर रीजन के वजह से हमने उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा है. And even when you see the food groups, grains are the first ones that are there, after which only protein and your other groups come in. So you make sure that you don't end up उसको त्याग करके कुछ फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड लाइक आपने बोला कि दो लोगों के लिए खाने की भी जरूरत नहीं है. बट ऐसे केसेस हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत भूख भी लगती है. ये क्यों हाँ, लगती है? क्योंकि वी आर नॉट एबल टू give that much amount of fiber in the diet. Like I already said, constipation भी एक होता है, तो feeling of fullness या satiety जो चाहिए होता है वो fibrous fruits and vegetables से, या even something like prunes etc that you can take in your diet in your first trimester, that definitely helps the mother. Even controlling the hunger, your constipation, acidity, there are so many things that these small little wonder foods contribute to the first trimester. Apart from that, I will also say that अभी तो ऐसा हो गया कि there are lots of researches that are going on with regards to your gut and brain axis etc. So make sure that the gut health is taken care of, because pregnancy में बहुत टाइम ऐसा होता है. ऑफ कोर्स देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और जेस्टेशनल डायबिटीज. ये सब के बारे में हम और भी पॉडकास्ट में हम बात करेंगे. बट अब जो हम बात कर रहे हैं विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आई विल से गट को जितना हम गट फ्रेंडली रख सकते हैं, जितना हम गुड बैक्टीरिया वहाँ गट के लाइनिंग को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इन दिस केस प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डू नॉट मिस आउट ऑन दैट. मेक श्योर. एंड इंडियन सिनेरियो में हमारे इतने सारे अच्छे प्री एंड प्रोबायोटिक फूड्स ऑलरेडी अवेलेबल है. आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि यू हैव टू गो एंड बाई समथिंग ऑफ द शेल्फ, समथिंग फैंसी और एनीथिंग. ऑलरेडी यू आर टेकिंग फोलिक एंड सप्लीमेंटेशन एंड ऑल. बहुत सारे केमिकल्स और एडवांस्ड पाउडर्ड फॉर्म लेने की भी जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली गो इन फॉर समथिंग लाइक घर का बनाया हुआ दही हो गया, अचार हो गया घर का बनाया हुआ, जिसमें सॉल्ट और ऑयल कंट्रोल्ड है. जैसे हम घर पे बनाते हैं तो वी आर नॉट मेकिंग इट इन अ कमर्शियल लेवल.
So you can Yeah. have that. घर पे आजकल तो kimchi भी बन रही है, recipes देख रहे हैं लोग. So you can you can get some organic based kombucha if you really like the taste of it. It hydrates you also, and it also helps you with your gut. So you can do these small little things which will help you. Again, things like garlic, etc., they are all prebiotics. They are definitely going to enhance your gut health. And ये चीजें हमें include करना बहुत बहुत it's very very important. So this, I think, we need to clear here in this podium, that there is no food that you need to avoid, and no food that you have to have in excess. So this should be your approach for the first trimester. एक चीज यहाँ पे हम वो भी एक हाईलाइट करना चाहेंगे कि जो वर्किंग मॉम्स है स्पेशली Hmm. उनके लिए, जब वो 9 hours 10 hours जब वो शी गोज ऑन हर वर्क, तो Hmm. शी कैरीज हर मील, ब्रेकफास्ट है या तो लंच वो कैरी करके ले जाते हैं साथ में, बट इट कम्स ऑन स्नैक्स तो इट Hmm. इज वेरी डिफिकल्ट कि हम वो टाइम पे क्या खाए, भूखे भी नहीं रह सकते वो टाइम पे। तो Correct. वो एक हम स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि प्लीज अवॉइड ईटिंग बिस्किट्स एंड जंक फूड एट दैट टाइम, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल मील्स आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मली जितने इम्पोर्टेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में उसके उससे डबल इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं। तो स्नैक्स में हम थोड़े से आइडियाज हम शेयर करेंगे कि व्हाट दे कैन कैरी। सो रिद्धि, अगर आप देखते हो कि सो आई एम श्योर यू आर मच यंगर ऑल्सो, बट माई पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, व्हेन दे वर प्रेग्नेंट, व्हाट वर द अवेलेबिलिटीज ऑफ स्नैक्स? दे यूज्ड टू मेक होम कुक्ड स्नैक्स. घर पे बनता था, ट्रेडिशनल चिवड़ा बनता था, शाम के वक्त फ्रेश बनता था, उसमें नट्स भी होते थे, उसमें थोड़ी अमाउंट की ऑयल भी होती थी, मसाले भी होते थे. सो स्मॉल लिटिल थिंग्स लाइक होममेड चिवड़ा. आप सिर्फ मखाना खरीद के लाओ, उसमें हल्दी, नमक, थोड़ा सा बटर या घी, जो भी आपको पसंद है, थोड़ा आपने वो डाल दिया, एड अ हैंडफुल ऑफ चना टू इट और पीनट्स टू इट, एंड यू हैव अ स्नैक इन हैंड. कुछ नहीं तो आप वो रोस्टेड चना ले लिया, चना जोर ले लिया. ओके. Maybe little pieces of coconut you can include in it. You can have some carrot sticks or cucumber sticks with an avocado dip. So there are small little things. सिर्फ थोड़ी homework की जरूरत है. So even to be very honest, working mothers, you can actually cut and keep your carrot sticks for the next 3 days. Cut it, put it in small boxes, and carry one every day with you. You've already made your avocado dip or something like that. Usko हमें सिर्फ लेके जाना है हमारे साथ. So there's not much of preparation that is required in the snacking as such. I think fillers are the most easiest. हमने गाड़ी में एक मिक्स्ड नट्स या मिक्स सीड्स एंड नट्स का एक पैकेट रख लिया. ट्रेल मिक्सेस आर अवेलेबल. उसमें ना सॉल्ट होता है ज्यादा, ना, सो इट्स ऑल रोस्टेड. गो फॉर ऑथेंटिक. रीड द लेबल्स. लेबल्स पढ़ के अगर हम खरीदने लगे food items, so I think half of our doubts will be cleared, and we will not end up having wrong foods. And again, when I'm talking about hydration, when you're hydrating yourself, let's say 1 glass every hour of the day, the chances of you feeling very hungry and going mad over whatever is available, मुझे खाना है, मुझे अभी भूख लगी, वो symptom आता ही नहीं है if you're hydrating your cells enough. Because if the cell is hydrated, it absorbs a lot of good nutrients, and then it stores it. The whole cycle, the biochemical cycle takes place in its normal turn, and you may not end up feeling very hungry or very thirsty any time of your day. बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमको भूख लग रही है, ऐसे हमें लगता है, बट इट्स एक्चुअली थर्स्ट. सो एक ग्लास पानी पी के देखो, 15-20 मिनट रुक के देखो, एंड देन इफ यू फील स्टिल हंग्री, देन रीच आउट फॉर एन एप्पल, एनी फ्रूट्स यू कैन हैव. You can go ahead and have any of the fillers that we are talking about. खाकरा है, खाकरा का आप स्प्राउट्स के साथ भेल बना लो. It's a simple thing. You can just boil the sprouts and keep it in the fridge. Use it for 2-3 days. Add it when you want to in your office table. Just आपको mix करना है. So I think आजकल ऐसा भी है कि even the offices have a little leeway if they know that you are into this wonderful phase of your life.
So that I'm sure anybody who is working, non-working also can take a tip that हमको सिर्फ माइंड लगाना है और थोड़ा सा प्लानिंग करना है, एंड देयर इट इज. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि देयर इज समथिंग स्पेशल फूड जिससे आपको बहुत कुछ मिलता है और कुछ खाने से आपको कुछ भी नहीं मिलता है. नो फूड कैन बी ग्रेडेड. एवरी फूड इज गुड न्यूट्रिशन इफ यू टेक इट इन द राइट वे एंड द राइट क्वांटिटी. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और भी प्रीथा जी, आपकी साइड से आपको कुछ मॉम्स के लिए क्या करना है, क्या खाना है, एंड व्हाट at the top they have to avoid during this trimester? So, starting from pregnancy point of view, first trimester में first will be your dark leafy vegetables. Um, जो भी अमरंथ हो गया, चौली की भाजी हो गई, रैडिश के लीव्स हो गए, कॉलीफ्लावर लीव्स. अभी तो इतने सारे सैलेड लीव्स अवेलेबल है मार्केट में. But just capture the greens. So anything that is green, leafy, okay, has to be a part of your diet every day throughout your pregnancy, I will say, but especially for the first trimester. So saying that, wo ek ho gaya. Second will be your legumes. So legumes means beans, pulses, जो भी दाल्स अवेलेबल हैं, चना, राजमा, छोले, any of these that you can overnight soak. अगर आप स्प्राउट्स घर पे करते हो तो वेल एंड गुड. इफ यू हैव एक्सेसिबिलिटी टू लेट्स से माइक्रो ग्रीन्स, वो भी अवेलेबल है मार्केट में right now, and they are very nominal. People are even cultivating it in their terrace. So if you have the accessibility, go for micro greens also. So ये second हो जाएगा जो हमें concentrate करना है. Third, like I said, whole grains, and this is the year of millets. तो इंडिया में तो हम मिलेट्स की बातें जितना भी करें कम है, बिकॉज एवरी रीजन हैज अ स्पेशल मिलेट ऑन इट्स ओन. So go for something that is traditional, which you have been eating from childhood and which we have forgotten just in the craze of fat diets. हमने बहुत सारे millets छोड़ भी दिए हैं. फिर से उनको लेके आइए आपके किचन में. Making something with a millet, like a pearl millet or something. उसका उपमा बनता है, पुलाव बनता है. It's a different taste also. It's a change to your palate. You may end up liking it and include it in your diet every day. Third will be that, again, whenever you're having any kind of carbohydrates, आपको गेहूं की रोटी अगर पसंद नहीं आ रही है तो उसमें आप वेरिएशंस लाइए. मे बी अ हैंडफुल ऑफ सोया फ्लोर डाल दिया, या बेसन का मिस्सी रोटी बना लिया. So there are variations that you can just start doing and start including it in your diet to get more of variety, because pregnancy के first trimester में ये पसंद है, वो पसंद नहीं है, वो बहुत होता है. So try different things. You don't have to stick to the same staple thing every day. Agar time permits, then try creating, if you have a baking machine at home, then try some different pies. You can try it with multigrain atta also. And there are people who are actually minting business out of making these healthy things that you can simply make at home. तो वो ट्राई करिए. वेराइटी ऑफ खाकराज दैट आर अवेलेबल, बाजरा बोलो, जवार बोलो, इसके भी खाकराज आजकल मिलते हैं. नाचनी, अनदर गुड सोर्स ऑफ आयरन, शुड बी इंक्लूडेड इन योर डाइट एज अ पार्ट इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इसके अलावा मैं अभी फिर से बोलूंगी, फाइबर फाइबर फाइबर. तो एनीथिंग रॉ, एनीथिंग सेमी कुक्ड, स्प्राउट्स थोड़ा सा, yes. Towards the second and third trimester, gastric problems के वजह से you may not really want to eat a lot of sprouts in your diet. First trimester में you can start including it as much possible. So go for those. अगर sprouted form में boil करके नहीं लेना है, you can even puree it. आप sprouts का आटा बना के उसका आप चीला बना लिया आपने, ओके. जैसे हैदराबाद का पेसरेटू डोसा है, इट्स ग्रीन मूंग विद द स्किन. So you can go in for something like that, uska bana liya, and who doesn't like a dosa? It's a beautiful dinner to have. So you can go for such things. Ye ho gaya. Fifth, calcium and vitamin D. Like I said, not only milk and milk products, you can even check for vitamin D in oils. So if you are aware
consumer, read the labels. And if something is fortified, like the oil that you're buying for cooking, and if it's fortified with vita D or some other vitamin E or something, go for that. My suggestion, go for cold pressed, so that there's not much of leaching out of nutrients from your oils. So वो एक आप ध्यान में रखें. So read your labels properly and try to include as much possible. एक important thing मैं भूल गई बोलना, DHA. So apart from calcium, vitamin D, vitamin E, B12, all of this is important, and DHA is also important. Docosa hexamine acid, that is also important because that helps in your brain development of the fetus. So very very important, very important. Try including that. Limit your sugars, limit your caffeine, limit your alcohol, limit your salt. सो लिमिटेशंस में ये सारी चीजें तो वैसे भी फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल वी नीड टू डू, मोर सो व्हेन यू आर इन दिस फेस ऑफ योर लाइफ. So it's not going to benefit only you, it's going to benefit the growth of your child also. Backup, you need to make sure that you are well informed of what you are planning to eat. Okay. Anything and everything, you cannot, like I said, if the egg is not cooked properly, then it may cause some repercussions. If the fruit or vegetable that you are going to eat in a restaurant is not cleansed properly, again gastric problems ho sakti hain. So be very clear that as much as you can, try eating home cooked food. Home cooked food is happiness, I will say that. It's a simple thing. आप बना रहे हो, अपने सामने बना रहे हो. And like रिद्धि आपने बताया रेनबो, सो इंक्लूड ऑल द कलर्स. आप सच में देखो, जो वुड बी मदर सारे कलर्स इंक्लूड करती है, उसका बच्चा भी आफ्टर ही इज बॉर्न सारे कलर्स खाने लगता है. सो देन देर विल बी नो कंप्लेन इवन एज अ न्यू मदर कि वो ये नहीं खा रहा है या वो नहीं खा रहा है. इट्स ऑल what you are providing him right from the time of conception. So Very true. I think these are the points that I will sum it up as. Thank you so much, Preetha Kiranji, for sharing your time with us and sharing this beautiful knowledge with us. Thank you so much for that. And stay tuned and stay connected क्योंकि हम और भी बहुत सारे qualified experts के साथ हम और भी बहुत सारे informative podcast लेकर आने वाले हैं for you. Thank you so much. Thank you, Riddhi, for this platform. Thank you so much. Bye.